manifold than you have done. By the time, John Bitas, by the time you reach his level, and if I am in the chair, trust me, you will get the same accommodation. Did I say yes? Reading your face, sir. You see, Thank you very much, sir. one second. Yes, sir. We have distinguished members in the House, both sides. We have distinguished members here. I always ensure that these members get precedence. And Honorable former Prime Minister H.D. Devagowda ji was not present when I indicated to the House that after talking to everyone concerned, we have devised a mechanism that whenever the former Prime Minister would like to make an input, it will be minimum 10 minutes, if his party does not have that much time. And I am grateful for Leader of the House and Leader of the Opposition for so appreciating. Sir, the issue also needs to be... Give him 30 seconds. Yes, thank you very much, sir. So, Sir, sit down. So, listed matters read with permission, Dr. John Bitas, 30 seconds. Thank you very much, sir. Sir, unfortunate incidents are happening in this country. There's an assault on freedom of speech and expression, which is enshrined in the Indian Constitution. Sir, I would just say that a movie which was censored and released in the theatre was asked to go back to the censor board again, and there have been 24 cuts resorted to because of the threats, and even the protagonists of the movies were depicted as anti-nationalists. If this is a situation in this country, I am fearing that the freedom of speech and expression which is granted to the people would be in peril. So I urge upon this House to see that such incidents doesn't happen. Even trolls and comedies are being deprecated. Sir, I'll come to you. I'll come to you. Movie should be banned. Sir, This movie should be banned. One second. Sit down. This movie. Sir, Why? Because hurt the feelings of Tamil Nadu. you are regarding Mullai Periyar. Sir, our country is... The feelings of Tamil Nadu people. Please sit down. Our country is fast becoming the paradise of Conclude. wounded people. Anybody and everybody is getting wounded. Please. Sir, you need to give a mark to the creativity and freedom of speech and expression. Okay. It is sacrosanct, sir. Excellent. It is sacrosanct. Nothing will go on record now. Nothing. One second. George Kurian now. I have given him time. Sir, this film is against Christian faith. It is Christian faith and the cross. And all the Christians in India, it is opposing KCBC, CBCI, opposing. The communists want to insult the Christians in this country. That is what I am telling. Nothing will go on record. See, today you can see the CBCI and KCBC, they passed the resolution against this film. I am a Christian. Don't insult me. These communists want to insult every religion. They want to insult every religion. Why they are insisting? Every religion. Shri Mohammad Nadim al Haq demand to confer Bharat Ratna to Indian origin astronaut Sunita Williams. Only what Shri Mohammad Nadim al Haq says will go on record. Sir, let us all welcome the safe return of Crew 9 to Earth after 286 days. They landed back on Earth on March 18th. Let me quote what the Honorable CM Mamata Banerjee said, and I quote, "Welcome Sunita Williams and Butch Wilmore back to Earth, finally and safely after so many days. Our daughter of India returns to us, and we are deeply, deeply happy and elated. We are profoundly happy for Butch Wilmore also. Hail their courage, hail their return, hail human glory. I congratulate the rescue team
for their overwhelming support and success, unquote. A few days after she made this statement, the Honorable CM of West Bengal spoke at the State Assembly, where she demanded that Sunita Williams should be conferred with the Bharat Ratna, India's highest civilian award. This would be a fitting tribute for her remarkable achievement. Through her eyes from space, Sunita Williams, when looking at India, highlighted the Himalayas ripple effect, the fishing fleets near Mumbai and Gujarat, and the network of lights visible across the country. Sunita Williams' achievement would make ISRO proud, which was established in 1969. Yes, sir, great institutions were built before 2014. The success of Sunita Williams has always been celebrated in India. Giving her the Bharat Ratna would be the ultimate celebration. Sir, let me remind my fellow parliamentarians that Sunita Williams was honored on a visit to India in 2007. Among the many accolades she received, she was also conferred with the Padma Bhushan. I do recall that Sunita Williams said, and I quote, "There is one lady I admire a lot," unquote. In fact, that lady is now with us in Rajya Sabha. Sunita Williams was referring to Mrs. Sonia Gandhi. Despite all the accolades showered on Sunita Williams from across the world and the UPA government in Delhi, the then government of Gujarat under the then CM did not felicitate her. A few days ago, she has expressed her desire to visit her father's home country and their ancestral village. She comes from Mehsana district, the same district where PM Modi hails from. Let me ask you, sir, who is a close relative of Sunita Williams? Who is a first cousin? Also from the state of Gujarat. Her first cousin is Haran Pandya. Yes, Haran Pandya, he was a politician from Gujarat who was eliminated in a very controversial way in 2000. Sir, in 2025, we demand Bharat Ratna for a super achiever with strong Indian and Gujarati roots. Sir, सितारों से आगे जहां और भी है, सुनीता तेरे इम्तिहान और भी है. Honorable Finance Minister. Sir, it's one thing to ask for. Sir, it's one thing to ask for Bharat Ratna for someone and as meritorious as Sunita Williams. But in the process to cast aspersions, bring in unrelated to the context people into the picture, also bringing in people who are no longer with us, unfortunately, who passed away, are all absolutely uncalled for, if I can say in the minimum of words. I think that portion of his, the Honourable Member's speech should be completely taken out of records. Other than, of course, all of us will be happy to consider Bharat Ratna and other things. But there is no way reference to any persons who are no longer alive and casting aspersions on the Prime Minister should be entertained here. Those comments must be removed. बिल्कुल it will be taken into account. वो चीजें हटा दी जाएंगे. प्लीज जो अप्रासंगिक तथ्य वो नहीं जाएंगे. प्लीज. श्री नीरज डांगी, demand for removal of 18% GST on insurance policies for senior citizens. हार्दिक आभार माननीय उपसभापति महोदय जी. जैसा कि सर्वविदित है, वृद्धावस्था में उम्र बढ़ने के साथ साथ आय कम हो जाती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे दवाओं की अधिक आवश्यकता होती है और चिकित्सा खर्च भी बढ़ जाता है. इन कारणों से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ जाता है. ऐसे में वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है. बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती हुई इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए. वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा हेल्थ प्रीमियम पर भुगतान किए जाने वाले मौजूदा 18% जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए. यदि यह कदम उठाया जाता है तो स्वास्थ्य देखभाल सस्ती हो सकती है और वृद्ध पॉलिसी धारकों के लिए बीमा की लागत कम हो सकती है, जो समावेशी स्वास्थ्य देखभाल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक एजेंडे का हिस्सा बन सकता है. भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम कम करने के लिए कई तरीकों से आवश्यक कदम उठा सकती है. जैसे एक दृष्टिकोण में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रीमियम में सब्सिडी देना, जो वरिष्ठ नागरिकों को रियायती प्रीमियम की पेशकश करने वाली बीमा कंपनियों को टैक्स देकर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य बीमा अधिक किफायती और सुलभ हो सके. इसी प्रकार एक अन्य रणनीति के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश को बढ़ाना है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और प्रीमियम कम हो सकता है। फिलहाल बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% है, हालांकि यह बजट में इसे 100% किए जाने का ऐलान है। आमजन को इसका लाभ कब मिलेगा वो अन्य प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा लागू आयुष्मान भारत योजना, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने का दावा करती है। इस योजना का और विस्तार किया जाकर इसे 70 वर्ष से घटा करके 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाना चाहिए। इन उपायों को लागू करके भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने में मदद कर सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें वित्तीय बोझ के लिए अनावश्यक चिकित्सा देखभाल व चिकित्सा सुविधा बिना किसी बोझ के प्राप्त हो सके। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ 5 लाख रुपए तक के कवरेज वाले गैर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को हटाया जाना चाहिए और लाख रुपए से अधिक के स्वास्थ्य कवर पर प्रीमियम के मौजूदा 18% के मुकाबले 5% जीएसटी किया जाना चाहिए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ये स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अफोर्डेबल बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। श्रीमती JB माथेर हिसम, need to promote Indian art, literature and cinema in order to nurture creative expressions. Associating are Mr. A. Rahim, Dr. John Britas. Please. So as I rise to talk about the need to promote Indian art, literature and cinema in order to nurture creative expressions, I wish to draw the attention of this House to a 2019 Malayalam movie Lucifer, a political thriller which was a blockbuster hit. As a sequel to Lucifer, Empuran was released. Empuran is an epic Malayalam cinematic creation in terms of its impeccable standard in its making, powerful message it carries, the spine and the courage the makers itself shows. Empuran is more than a film, it is an act of resistance against communal fascism. Both Lucifer and Empuran stars the legendary actor Mohanlal, Manju Warrier, Prithviraj, a fearless director, Murali Gopi, a bold scriptwriter. They all stand as beacons of resilience. Empuran has captivated audience with every frame and undoubtedly a super hit on day one itself. But immediately after the movie release, a hate campaign, cyber attacks started against these brilliant artists. Abuses and threats against such a great actor, Mohanlal, against Prithviraj, against his mother Mallika Sukumaran, against his wife Supriya Menon. Absurd and atrocious. RSS organizer has been attacking Empuran, publishing article day after day, 5 days in a stretch. And sadly, even Mohanlal, I'm speaking about this, even Mohanlal unchallenged icon of Malayalam cinema. Please take your seat. It's not going on record. आपने नोटिस कुछ और दिया है और बोल किसी और विषय पर रही है। ये आपने सब्जेक्ट कुछ और दिया और बोल कुछ और। इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नो। सुश्री स्वाति मालीवाल कंसर्न ओवर अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ ई-रिक्शाज इन इंडियन सिटीज। प्लीज, आपने सब्जेक्ट कुछ और दिया था, बोल कुछ और रही है। इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। मालीवाल जी प्लीज, मालीवाल जी यू स्पीक, दैट विल गो ऑन द रिकॉर्ड। Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Sir, Please, it's Maliwal ji speaking. You take your seat. No, you take your seat. Maliwal ji, please speak. thank you, sir. Please. Sir, पहले ई-रिक्शा Please take your seat. Sir, please restart my time, sir. Please take it. Please. Sir, please restart my time, sir. It will start now. We speak. Sushri Maliwal, please speak. थैंक यू सर। सर, पहले ई रिक्शा एक किफ़ायती और इको फ्रेंडली
परिवहन का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज बिना निगरानी के चलते ये ज्यादातर दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं। सर, जहां ऑटोज और टैक्सीज के लेकर बहुत सख्त नियम है, वहीं ई रिक्शा धड़ल्ले से बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी जवाबदेही के चले जा रहे हैं। सर, दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन के बाहर देख लीजिए, दिल्ली के किसी भी मार्केट के बाहर देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा सड़कों के ऊपर खड़े होकर जाम लगाते हुए दिखेंगे। सर, हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे ई रिक्शा चालक गलत हैं, पर सच ये है कि बहुत ओवरलोडिंग होती है। एक एक ई रिक्शा में जहां 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं, वहां 8 से 10 लोग बिठा दिए जाते हैं। सर, ये ई रिक्शा के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि अगर हल्का सा बैलेंस बिगड़ा नहीं, पूरी की पूरी गाड़ी पलट जाती है। सर, ये भी देखने को आता है कि बहुत सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स, उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है, ना ही किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग, रॉन्ग साइड पे चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट तोड़ते हैं, ये सब आम होता जा रहा है। सर, राज्य सरकारों के पास कोई आंकड़े भी नहीं है। दिल्ली में ही बताया जाता है कि 2.5 लाख से ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पे चल रहे हैं, पर कितनों के पास रजिस्ट्रेशन है, कितनों के पास लाइसेंस है, सर किसी को नहीं पता। सर, 1 महीने पहले एक 10 साल की बच्ची की दिल्ली में मौत हुई क्योंकि एक तेज रफ्तार ई रिक्शा आकर उसे टकरा गई। सर, अभी कुछ समय पहले एक 7 साल के बच्चे की भी दिल्ली में मौत हुई क्योंकि एक ई रिक्शा के अवैध चार्जिंग पॉइंट से उसको करंट लग गया। सर, इस तरीके के इंसिडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले ई रिक्शा की संख्या को सीमित करें। ई रिक्शा के वाहन और चालक दोनों का लाइसेंसिंग होना चाहिए, रूट निर्धारित होने चाहिए, स्टैंड निर्धारित होने चाहिए। जितने अवैध चार्जिंग पॉइंट्स चल रहे हैं ई रिक्शा के, सबको बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई नियम तोड़े तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सर, केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकारों की इस इशू पे जवाबदेही तय हो। सर, हमें सुविधा चाहिए लेकिन सिस्टम के साथ, हमें रफ्तार भी चाहिए लेकिन जिम्मेदारी के साथ, और सबसे बड़ी बात सर, हमें प्रगति चाहिए लेकिन किसी की जिंदगी की कीमत पे नहीं। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं इसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरे सामने वो दोनों विषय पड़े हुए हैं जो जियो आवर के लिए दिए गए थे, और इसके पहले 2 वक्ताओं ने जो विषय दिए थे उससे बिल्कुल अलग विषय उठाए। आप जानते हैं नहीं उठा सकते, इसलिए वो चीजें रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। कृपया रूल्स का फॉलो करें। माननीय श्री के.आर. सुरेश रेड्डी, कंसर्न ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एट हैदराबाद यूनिवर्सिटी। Yes, I'm here, sir. Deputy Chairman, sir, I would like to raise an important issue concerning the University of Hyderabad. The land crisis threatens education, environment and justice, sir. The Telangana state government has initiated the process of selling 400 acres of government University of Hyderabad's land at Kanchagachipoli for commercial purposes, sir. This decision directly contradicts the university's founding principles. The University of Hyderabad was established in 1974 through the 32nd Constitutional Amendment under Article 371D(e) to promote education and research for the Telangana region, which historically faced educational neglect. The move to sell this land is not just a breach of public trust, but a threat to students' future and a serious environmental hazard. Our party and our party working president, K.T. Ramarao, has vowed support to this agitating university students, sir. The students expressed anguish over this betrayal, highlighting how it jeopardizes the university's future expansion and compromises higher education access for marginalized communities. Environmental catastrophe in making, sir. This land in question is a critical natural sanctuary in Hyderabad's shrinking urban ecosystem. It is home to 237 species of birds and endangered wildlife, sir, including the Indian star tortoise, spotted deer, Indian rock python, monitor lizards, and so on. It has also got 2 water bodies, Peacock Lake and Buffalo Lake, serving as breeding grounds for the birds and migratory birds, sir. Selling this land would destroy biodiversity, damage natural system, and disturb the city's fragile ecological balance.
Our party has raised concern that the state government plans to commercialize this parcel of land, which will eliminate green cover and threaten Hyderabad's environmental sustainability. The key environmental violations which are here are the Wildlife Protection Act 1972, the Forest Conservation Act, the Environmental Protection Act, sir. The University of Hyderabad educates over 5,400 students, mostly belonging from backward class, scheduled tribes, OBCs, economically weaker section, including a sizable number of disabled students who avail education here, sir. Now the students for the first time have come in protest day. The protest of the students is not for any increase in mess charges. It is not for better faculty. The students are fighting for the voiceless flora and fauna there, sir. And these students are being brutally taken away by the police, lathi charge, and the entire bulldozing is being done. It is for the first time in the country. The students are fighting for the environment and the state is oppressing them. Now this is... Thank you. Thank you. माननीय श्री धैर्यशील मोहन पाटिल डिमांड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ GI टैग अल्फांजो मैंगो ऑफ कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र. प्लीज टेक योर सीट. आदरणीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य का कोंकण क्षेत्र का जगत प्रसिद्ध हापुस आम को प्राप्त हुआ जियोलॉजिकल इंडिकेटर टैग नियम का उल्लंघन, इसके बारे में अध्यक्ष महोदय मैं बोलने वाला हूं. अध्यक्ष महोदय, कोंकण क्षेत्र में उत्पाद होने वाला हापुस आम मतलब अल्फांसो मैंगो अपने मधुर रस, उत्तम स्वाद, सुनहरा रंग व तंतु विरहित पल्प के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है. हापुस आम के ये गुणवत्ता विशेष कोंकण के रासायनिक और भौतिक गुणवत्ता पूर्ण माटी और पानी और हवा के कारण आती है. इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, अगर यही हापुस का पेड़ अगर कोंकण व्यतिरिक्त अन्य क्षेत्र में लगाया जाए तो उसको आने वाला फल है ये इतना गुणवत्तापूर्ण नहीं रहेगा. इसलिए अध्यक्ष महोदय, कई रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद जियोलॉजिकल इंडिकेटर अधिनियम 1999 द्वारा GI रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा महाराष्ट्र के कोंकण के 5 जिले जिसमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणा और पालघर, इसमें पैदा होने वाला या इसमें हापुस के पेड़ को लगने वाला फल मतलब आम ही हापुस माना जाएगा, ऐसा अध्यक्ष महोदय माना जाता है. मतलब अध्यक्ष महोदय, अन्य क्षेत्र में लगाया गया हापुस जैसा पेड़ को आने वाला आम यह हापुस नहीं माना जाएगा. अध्यक्ष महोदय, जैसा लंगड़ा आम यूपी को उत्तर प्रदेश का रहता है उसे GI मानांकन मिला है, मालदा पश्चिम बंगाल का रहता है. इसका मतलब यह अध्यक्ष महोदय, अगर महाराष्ट्र में या कोंकण में लंगड़ा आम का पेड़ लगाया जाए या मालदा आम का पेड़ लगाया जाए तो उससे आने वाला फल मालदा या लंगड़ा नहीं माना जाएगा. अध्यक्ष महोदय, GI ऑथेंटिकेशन के कई फायदे हैं. ग्राहक को गुणवत्तापूर्ण ऑथेंटिक उत्पाद मिलता है, किसानों को आर्थिक फायदा होता है, पारंपरिक विरासत का संरक्षण होता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने माल की यहां पर पहचान रहती है. अध्यक्ष महोदय, आम का सीजन अभी चालू है और अध्यक्ष महोदय, बाजार में कोंकण का हापुस जितना आता है उससे 3 गुना हापुस बताकर अध्यक्ष महोदय मार्केट में बेचा जाता है. मतलब अध्यक्ष महोदय, एक हापुस के पीछे 2 आम बनावट हापुस बेचे जाते हैं. अध्यक्ष महोदय, इससे ग्राहक को नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है और ब्रांडिंग हो नहीं पाता. अगर अध्यक्ष महोदय ऐसा ही चला रहा तो हापुस की गुणवत्ता कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में ये विरासत यहाँ पर नष्ट हो जाएगी. अध्यक्ष महोदय, मेरी ये मांग है सभा यहां पर सदन में यह मैं मांग करता हूं कि कोंकण से बाहर से आने वाला हापुस आम कई APMC और व्यापारियों द्वारा खरीदा और बेचा जाता है. अध्यक्ष महोदय, इस तरीके का व्यवहार GI टैग अधिनियम 1999 द्वारा गैर कानूनी मान के गैर व्यवहार करने वालों को दंडित किया जाए और कोंकण की इस विरासत को अध्यक्ष महोदय संरक्षित किया जाए. धन्यवाद. श्री रीता ब्रता बनर्जी डिमांड फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड डिफॉल्टर्स. Thank you, sir. The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 is one of the most important social security schemes for the benefit of the working people of our country. This act provides for the institution of provident funds, pension funds and deposit-linked insurance funds for employees in factories and other establishments. Provident Fund is a central government managed retirement savings scheme where both employees and employers contribute a portion of the employee's salary to create a fund for retirement or on emergencies managed by organizations like the Employees Provident Fund organization. Sir, unfortunately enough,
defaults under the EPFO has reached a record high of almost rupees 26,000 at the end of 23-24, marking an increase of 69.3% from rupees 15,254 crores the previous year, according to the official data. The private sector's default on Provident Fund deposits with the EPFO has been constantly on the rise in the last 5 years in an alarming rate. In the private sector, sir, particularly, a large number of employers are not only depositing their contributions only, but also are not depositing the contribution of the employee, which the employers are deducting during salaries. This is a dangerous and alarming trend. In order to ensure stringent measures against the PF defaulters, sir, the concerned state government must have the concrete PF data from the PF offices, which are not happening in reality. The Labour Department of the Government of West Bengal has been repeatedly requesting the additional Central PF Commissioner in charge of West Bengal, Sikkim and Andaman and Nicobar Islands to share the list of defaulters of jute mills since 2024. The concerned additional Central PF Commissioner has bothered not to give any details till date, sir. There was a written complaint to the Labour Minister, West Bengal, against a private contractor agency working at Haldia Dock Complex by nearly 1,000 contractual employees of Haldia Port regarding huge PF default. The Labour Department has been sending formal letters to the same additional Central PF Commissioner since August 2023, but till date no concrete reply has not been received. Naturally, a suspicion of an unholy nexus between the said office and the contractor arises. The question is whether this particular office, situated in DK Block, Sector 2, Salt Lake, West Bengal, is trying to protect that particular PF defaulter at any cost. Similarly, since 2024, the West Bengal Labour Department has been writing to the regional Provident Fund Commissioners of Jalpaiguri, Shiliguri and Darjeeling requesting for the garden-wise PF dues under their jurisdiction. Unfortunately enough, sir, no concrete reply has been received from them. In order to ensure stringent action against PF defaulters, through you, sir, I will request you to shift to Srimati Darshana Singh, demand for mandatory provisions of first aid training for teachers and students in the schools. Srimati Darshana Singh, please. धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज मैं इस शून्यकाल में विद्यालयों में प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड के प्रशिक्षण देने हेतु विषय पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं आपका ध्यान विद्यालयों में प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड की शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ। महोदय, स्कूलों में अक्सर बच्चों के साथ कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि चोट लगना, जलना, सांप या अन्य जीव जंतुओं के काटने की घटनाएं प्रमुख हैं। इन आपातकालीन स्थितियों में सही समय पर दिया गया प्राथमिक उपचार जीवन को बचा सकता है। अतः महोदय, इस तरह की दुर्घटनाओं से जान माल की रक्षा करने के लिए स्कूलों में शिक्षकों एवं बच्चों दोनों के प्राथमिक उपचार के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ऐसी दुर्घटनाओं से होने वाले जान माल की हानि को कम किया जा सके। इस प्रशिक्षण में उन्हें दुर्घटनाओं से बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार से संबंधित सभी तकनीकी जानकारियां जैसे जानवरों के काटने पर उपचार, CPR और अन्य जीवन रक्षक तकनीकें सिखाई जाएं। यह प्रशिक्षण शिक्षकों एवं बच्चों को न केवल स्कूल परिसर के अंदर आपातकालीन स्थितियों में मददगार बनाएगा, बल्कि ये प्रशिक्षित शिक्षक और ये बच्चे स्कूल के बाहर भी परिवार और आस पड़ोस के में होने वाली घटनाओं में मदद कर पाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि विद्यालयों में प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाए और सभी शिक्षकों व छात्रों को इसका प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य रूप से रखी जाए। समय समय पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. V. Sivadasan, demand to address the problems faced by workers of National Health Mission. Respected Chair, the health workers of various projects of NHM
are working under great occupational risk. They have no job security. They are facing huge crisis. Doctors are getting very low salary. The salary of the nurses and the salary of workers are also very low. So that is very meager compared to the salaries of the permanent staff. Despite the Supreme Court verdict mandate on equal pay for equal work, this principle is not applied for them. They are forced to toil for a minimal pay despite years of service. Their positions are not regularized and they remain temporary. There is need for regularization of the jobs, implementation of proper bylaws addressing disparities in pay among paramedics, establishing a clear transfer policy, extending EPF benefits to all categories and ensuring timely payment of salaries. Sir, they should be paid salaries to do their job with dignity. The health sector is in the state list, but grabbing the power of the state, union government is making lot of regulations for the schemes. The disbursement of the money of the scheme is used as a tool for destroying the development of the concerned state. In 2005, when NRHM was started, the government said that the union government will provide accessible, affordable and quality health care for rural population, especially vulnerable groups. Now, the name has been changed to NHM, but the scheme is running in the opposite direction. For expanding the availability of welfare healthcare, the union government should provide the money to the states. The states have made huge investment in the health sector. Union government is telling that they don't have enough money in health sector. Union government is spending a very less amount. It is only 0.27% of the GDP. There is a lot of space for improvement. Strengthening the state is one of the solutions for providing better healthcare facilities, not bypassing the right of the states. That is against the spirit of the Constitution. Sir, that will destroy the entire healthcare system, not only in rural India, but also in urban areas. Now here in the House, Karnataka is requesting for the share of the health share in the healthcare. West Bengal is requesting for their share. Tamil Nadu is requesting. Telangana is requesting. Kerala also requesting for the share. All across India, interest of the state is trampled upon by the union government. So I request the government. Thank you. Sri Ramji Lal Sumanji need to take measures to resolve farmers' problems. उपसभापति जी, पूरा देश जानता है कि एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन हमारे देश में चल रहा है। यूं तो उनकी कई मांगे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि ये फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, एमएसपी घोषित किया जाता है, उसको कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं देश के किसानों के श्रम को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास करने के बाद इस देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। किसान खुद भूखा रहा, लेकिन उसने देश की आवश्यकताओं को पूरा किया। उपसभापति महोदय, सबसे ज्यादा तकलीफ दी है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रभावी पहल की जानी चाहिए, वो प्रभावी पहल नहीं की गई। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जगदीश सिंह डल्लेवाला किसान नेता एक लंबे समय से अभी भी भूख हड़ताल पर है। 17 मार्च से सरकार ने घोषित किया है कि वो किसानों के गेहूं की खरीद करेगी। सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार भी किसान खुले बाजार में ज्यादा गया, सरकारी खरीद केंद्रों पर कम गया, और जो स्थिति है एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलने के कारण किसान की प्राथमिकता
खुला बाजार होती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने जो गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है, सरकार किसी भी कीमत पर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। उपसभापति महोदय, लोग खेती करना छोड़ रहे हैं, कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण खत्म हो रहा है। उपसभापति जी महोदय, आप सब जानते हैं कि इससे पहले जो आंदोलन हुआ, तमाम किसान उसमें शहीद हुए, किसानों पर झूठे मुकदमे लगे, वो झूठे मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए। और सबसे ज्यादा तकलीफ देही है उपसभापति महोदय कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली कमेटी है, कृषि मंत्रालय के अधीन संयुक्त सचिव इसका अध्यक्ष होता है, न तो उसमें किसानों के नुमाइंदे होते हैं न कृषि विशेषज्ञ होते हैं। सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं आपके मार्फत ये आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं का हल तब तक नहीं होगा जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती। इसलिए मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार किसानों की पीड़ा को समझे और तत्काल इस देश में घोषित करे कि किसानों को। धन्यवाद। श्री मयंक कुमार नायक जी, डिमांड टू स्टार्ट मेहसाना मुंबई फ्लाइट्स अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ध्यान उत्तर गुजरात के महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र मेहसाना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में हवाई सेवा की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र का विकास को गति मिल सकती है। मेहसाना न केवल स्वयं एक औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है, बल्कि इससे निकटवर्ती जिले पाटन है, बनासकांठा है और राजस्थान के सटे जिले हैं, उनसे सभी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इन जिलों से नागरिकों को चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार एवं रोजगार के हेतु मुंबई जाना होता है। जैसे मेहसाना से मुंबई एक उड़ान योजना के अंतर्गत उड़े देश का आम नागरिक, उसके अंतर्गत मेहसाना से मुंबई और मुंबई से मेहसाना की एक फ्लाइट शुरू की जाने से इस क्षेत्र से जो डेवलपमेंट होने वाला है वो डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। और वहां आने जाने वाले सभी, जैसे हमारे वहां ओएनजीसी है और मारुति का प्लांट लगा हुआ है, होंडा का प्लांट लगा हुआ है, और माननीय मोदी जी जब वहां मुख्यमंत्री थे और अभी प्रधानमंत्री के तौर पर वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी ज्यादा हुआ है। तो मेरा जो टूरिज्म सर्किट भी पूरे नॉर्थ गुजरात के अंदर डेवलपमेंट की जा रही है। जैसे पाटन की हमारी रान की वाव है, उसकी प्रतिकृति 100 की नोट में भी सरकार ने माननीय मोदी जी ने रखी है, तो उस स्थल को देखने के लिए भी पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो मेरा सदन के माध्यम से यही निवेदन है कि मेहसाना की में अभी हवाई पट्टी भी मौजूद है और उस हवाई पट्टे पे पायलट ट्रेनिंग स्कूल भी चलती है। तो पायलट ट्रेनिंग स्कूल चलने की वजह से हमारे वहां से गुजरात के और देश को नए नए पायलट भी मिलते हैं। तो हमारा यही निवेदन है आपके माध्यम से कि अभी मेहसाना भी महानगर बन गया है, तो वहां सा जो डेवलपमेंट है वो एक एयर कनेक्टिविटी मुंबई के साथ मिल जाए, जिसके कारण वहां हमारे जो व्यापारी है, हमारे वहां जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारी जो जनता है, और वहां पूरा टूरिस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जिला है मेहसाना, और वहां भी बुद्ध भगवान का भी पूरा निकला हुआ है और आर्कियोलॉजी का भी बड़ा म्यूजियम वहां लगा हुआ है। देश और दुनिया से भी लोग आ रहे हैं। तो मेरा यही आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द उड़ान योजना के अंतर्गत मेहसाना से मुंबई और मुंबई से मेहसाना की कनेक्टिविटी करते हुए एक हवाई प्लेन चलाया जाए। यही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद मयंक कुमार जी। श्री संत बलबीर सिंह जी, कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री। पंजाबी में बहुत बहुत धन्यवाद उप चेयरमैन साहब। सारा नु प्यार भरी सत श्री अकाल। साहब श्री गुरु नानक पातशाह ने पवन गुरु पानी पिता माता धरतम हते दिवस रात दो दाई दाया खिले सगल जगत। पानी दी दो इन्ना बड़ा महात्म देता है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खुराक साडा फंडामेंटल राइट है जो सानू संविधान दिंदा।
ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਲਚਰ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਡਰੇਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਾਈਪਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1974 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਵੇਰੀ ਘੱਗਰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੀ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1974 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1974 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ धन्यवाद। Dr. Sasmit Patra demand to include languages spoken by tribal communities in the 8th schedule of the Indian Constitution. जो सूची में है वैसे ही पढ़ रहा हूँ संजय। मैं इस सूची के अनुसार जा रहा हूँ संजय जी बैठिए प्लीज बोले। मैं सूची के अनुसार ही पढ़ रहा हूँ प्लीज आप बैठे। मैं सूची के अनुसार ही पढ़ रहा हूँ प्लीज आप Honorable Deputy Chairman, sir, I rise today to draw the kind attention of this august House to a long pending and deeply felt demand, the inclusion of Ho, Mundari, Bhumij, Kui and Sora languages in the 8th schedule of the Indian Constitution. These languages are not just modes of communication, they are lifeblood of millions of tribal people across multiple states. Their recognition is essential for preserving India's linguistic and cultural diversity and upholding the constitutional commitment to protect the rights of scheduled tribes. Sir, these languages have a rich oral and literary tradition and are spoken by large tribal populations across multiple states. Ho language, spoken primarily in Odisha, Jharkhand, West Bengal and Chhattisgarh. Mundari language, spoken mainly in Odisha, Jharkhand, West Bengal and Assam. Bhumij language, spoken predominantly in Odisha, Jharkhand and West Bengal. Kui language, spoken mainly in Odisha, some parts of Andhra Pradesh. Sora language, spoken mainly in Odisha and Andhra Pradesh. While Odisha is home to the largest number of speakers of these languages, their influence extends beyond state borders. These languages are spoken in Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, Assam, Andhra Pradesh and even parts of Bihar, forming an integral part of the linguistic heritage of eastern and central India. Their exclusion from the 8th schedule denies recognition, development support and constitutional protections to millions of indigenous people across multiple states. Odisha has been at the forefront of championing this cause
under the leadership of former Odisha Chief Minister and Biju Janata Dal President Shri Naveen Patnaik ji. The Odisha Cabinet formally approved this demand through a resolution making it a clear policy commitment. The Odisha government, then led by Shri Naveen Patnaik ji, had written multiple letters to the Government of India urging immediate action on this matter. Therefore, I strongly urge the Honorable Union Government to honor the demand of the Odisha Cabinet, the then Odisha government, and millions of tribal people across multiple states by including Ho, Mundari, Bhumij, Kui and Sora languages in the 8th schedule of the Constitution. I conclude by saying that it is not a linguistic issue alone. It is a matter of justice, dignity, and constitutional equality for billions of tribals, brothers and sisters of India. I thank you, sir. Jai Hind. Thank you. Susri Susmita Devji, concern over the delay in disbursement of pensionary benefits to government employees. Thank you, sir. Sir, pensioners have served the country with dedication, and denying them fair and timely pensions is unjustified. So the Supreme Court has repeatedly stated that the right to receive pension is equivalent to right to property under the Constitution. I quote, "Pension is neither a bounty nor a matter of grace. It's a social welfare measure rendering socio-economic justice to those who in the heydays of their life ceaselessly toiled for the employer on an assurance that in their old age they would not be left in the lurch." Sir, the recent amendments to the Central Civil Service pension rules have given rise to some concern, and I demand that the government re-looks at it. So the concern is spreading fast among state government employees as well as central government employees. Sir, the changes suggest that pensioners who retire before January 2026 may be deprived of the benefit of the 8th Pay Commission, creating an unfair distinction between retirees. This is unjust, sir. The Employee Association and unions have strongly criticized this. According to the changes to the civil service pension rules, the government has given itself a power to classify pensioners at its discretion. Such arbitrary policy making violates the principles of fairness and transparency, sir. Sir, as a good example, I look at the 7th Pay Commission implemented in 2016. Which ensured that pensioners, whether retired before or after 2016, received equal pensions. The principle of no discrimination between old and new pensioners has been repeatedly upheld by the Supreme Court. The government is now attempting to reverse this. Sir, according to government data, by 1st March 2025, nearly 36.57 lakh government employees and 33.91 lakh pensioners will be affected by these changes. Sir, the central government employees and pensioners are expecting a salary and pension hike under the 8th Pay Commission, which is also likely to be delayed. Reports suggest that the government is also given itself the power to decide when to implement the Pay Commission's recommendation and who should qualify for pension benefits, leaving lakhs of pensioners in a state of uncertainty. I demand from the government, sir, that these pensioners have served the country with dedication, and denying or delaying their fair pension is unjustified. I urge the government to ensure all pensioners, no matter when they retire, receive their rightful benefits and enjoy parity under the Pay Commission. Thank you, sir. Thank you. Srimati Sulata Dev, demand to enforce stricter laws to protect animals, wildlife and nature. Thank you so much, Deputy Chairman, sir. सब इंसान और सब अपने अपने प्रावधान के लिए बोलते हैं. मैं आज जो बोल नहीं सकते अनस्पोकन एनिमल है, मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ. हम माइथोलॉजी भी हमको सिखाता है कि कैसे हम अपने जो एनिमल और बर्ड्स को कैसे बचा के रखें. इसलिए बहुत सारे जो देवता और देवी और देवता है उनके वाहन के हिसाब से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को बचाने के लिए ये किया गया है. मगर हम अब इस सोसाइटी में, ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां एनिमल क्रूरलिटी डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है. चाहे वो प्रेग्नेंट डॉग हो, कैट हो, फिर एलिफेंट हो, कोई भी तरह के एनिमल हो, उसके ऊपर रोज के रोज क्रूरलिटी होती रहती है. और
ओपन स्लटर हाउस आप देखें तो सारे जगह पर मौजूद है और इससे चलते बच्चों के दिमाग पर भी बहुत खराब प्रभाव पड़ रहा है। मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जब ट्रेन लाइन में बहुत सारे एलिफेंट्स की कट के मौत होती है, कितने गाय और कितने की चीज़ों के मौत होती है, उसके चलते जब बोला जाए तो ये रेलवे के ऊपर फिर फॉरेस्टर अपना दोष देते हैं, फॉरेस्टर को फिर रेलवे के ऊपर दोष दिया जाता है। इसमें कोई दुविधा है कि क्या किसके ऊपर दोष देने से कुछ नहीं होता। बीएनएस जब लागू हुआ था तब मैं तभी भी बोली थी कि एनिमल के ऊपर क्रूएल्टी जो हो रहा है उसके चलते कड़ी से कड़ी नियम बनाना चाहिए, मगर एनिमल के ऊपर जो क्रूएल्टी डे बाय डे हो रहा है उसके चलते कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट में हो रहे क्रूएलिटी जो कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे सके। अभी बरहमपुर, ओडिशा के बरहमपुर में एक डॉग को 3-4 बार और चाकू से काट दिया गया। ऐसे ही होता है बहुत सारे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एनिमल क्रूएलिटी के ऊपर ऐसा आइन आना चाहिए कि सबको जो ऐसा क्रूएलिटी करे फिर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 331 श्री संदीप कुमार पाठक। Question number 331, sir. Honorable Minister. Sir, the answer is laid on the table of the House. Supplementary one, Shri Sandeep Kumar Pathak. Thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, as all of us know that in 1950s, India and China both were doing equally in terms of economic growth. There it is a matter of all investigation and study as to what happened that made China what it is now and what happened to India's story. All of us understand that the industrialization was the key, and behind this industrialization there was the vocational and skill development training. So first of all, I would like to highlight the fact that the ministry that the Honorable Minister is heading is one of the most important ministry. Under this ministry, if the answer we have received is that in 2022-23 there were 7,000 trainees who were trained. 23-24, 16,000 trainees were trained, and 24 and 25, 35,000 trainees were trained. So my question to Honorable Minister through you is, sir, whether in 1.4 billion country, this 35,000 people training in a year is sufficient, and if it is not sufficient, so what is it that the ministry is trying to work upon it? Honorable Minister. Sir, through you, I'd like to place on record the question focused on entrepreneurship training, a particular skill under PMKVY, which is a scheme. So that is why the number that is being reflected in the answer is low. Otherwise, the reach of PMKVY up till now, 1.6 crore beneficiaries have been there. Sir, in the answer, we only spoke about the particular courses that offer entrepreneurship development specifically under PMKVY. Apart from this scheme, which is a flagship scheme, there are various other programs also that target the development of entrepreneurial thinking, out-of-box thinking, critical thinking in our student base. Sir, for instance, we have two institutions which are autonomous bodies working under the ministry. One is Indian Institute of Entrepreneurship, which works out of Guwahati. The second is NISBUD, which is National Institute of Small Business Development, which is stationed in Noida. Sir, in these two organizations, we do a number of programs working with other departments and ministries. The total number of programs, for instance, let me tell you, sir, IIE, from financial year 13-14 to 15th March 2025, 10,765 programs were conducted in 3,52,552 participants. In NISBUD, 35,689 programs have been conducted from financial year 2015 till November 2024, and in these programs 9,22,961 participants were there. Again, I reiterate, this is only for the EAP, which is the Entrepreneurship Awareness Program, the EDP, which is Entrepreneurship Development Program, and ESDP, which is Entrepreneurship Skill Development Program. These particular programs, these are the numbers that reflect under these schemes. Second supplementary, Shri Sandeep Kumar. Thank you, thank you, sir. मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस ट्रेनिंग के बाद किसी भी प्रकार की फंडिंग का कोई प्रावधान नहीं है,
और आश्चर्यजनक बात यह है ऑनरेबल चेयरमैन सर कि इसका नाम ही एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इमेजिन करिए कि कोई एक महिला, कोई माता या बहन ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेती है या टेलरिंग की ट्रेनिंग लेती है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि उसको अपना खुद का खोलना होगा, खुद का व्यवसाय करना होगा। आप ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, उसमें जो आप फंडिंग दे रहे हैं उसको इससे एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप जॉब सीकर क्रिएट कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे और ना ही आप जॉब क्रिएटर कर रहे हो, आप जॉब सीकर क्रिएट कर रहे हो। तो ओवरऑल इसका जो पर्पस है, जो मैं समझाऊं प्रधानमंत्री जी के भाषण से और सरकार के विजन से, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेजर डिजाइन फॉल्ट है। और डिजाइन फॉल्ट किसी भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी और जॉब क्रिएशन कैन बी द ओनली बेसिस, देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ दिस। थैंक यू। Honorable Minister. Sir, large number of our beneficiaries under the flagship scheme of PMKVY have reported to be self-employed. There's another scheme that we have done which is not directly under PMKVY. It's a new initiative. It has been launched in coordination with Niti Aayog and Women Entrepreneurship Platform, which we just launched in February and March across a number of states, working with higher educational institutions. Total number of 1,200 girl students have been selected for development of entrepreneurship, their abilities and competencies, and seed funding for the people, for the girl students who qualify for the last round is also provided under the scheme. So the Honorable MP said that there is no funding which is there as part of PMKVY. That is a fact. But as we all know, the government is taking immense strides forward in our startup ecosystem. More than 1.5 lakh startups are registered, recognized. We are world beaters in innovation. And he spoke about Mudra, sir. If I just give the numbers on Mudra, more than 51 crore Mudra loans have been provided. 50% of those beneficiaries come from marginalized sections, OBC, SC, ST. 68% of those 51 crore loans have been given to women. So that is just one scheme that that I am aware of, that I placed for the House. The honorable member wanted to know precisely that these schemes favor job seekers, and he wants the premise of the scheme should be self-employability. Am I right? So on that, if not at the moment, you may interact with the honorable member. Okay, good enough. Because of our skilling intervention. Sir, in PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, for the tenure of 24-25, 138 enterprises have been started. Under our entrepreneurial climate through training of trainer program and EDP program in Jan Shikshan Sansthaans, 1463 enterprises have started. Our pilot project for entrepreneurship development program in financial year 22-23, more than 2,000 enterprises have been started. If you do a summation of these, you will find that more than 25,000 enterprises have started directly because of the skill training that the beneficiaries are undergoing. But I am sure you will keep the suggestion in mind also. Supplementary number 3, Shrimati Dharamshila Gupta. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या बिहार में ऐसे प्रशिक्षित युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या स्टार्टअप निधि का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ तो इसका स्पष्ट करें। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। सभापति जी, अभी मैंने जैसे बताया, सवाल PMKVY के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यमिता विकास के जो हमारे कार्यक्रम है उस पे था, और उसमें हमने स्पष्ट जवाब में भी लिखा है, जो हमारे अभी सांसद जी पाठक जी कह रहे थे, उस योजना में कोई प्रावधान स्टार्टअप के लिए फंडिंग का नहीं है। फिर भी क्योंकि माननीय सदस्य बिहार के बारे में पूछ रही हैं, जो विभिन्न कार्यक्रम हम चलाते हैं दूसरे मंत्रालयों के साथ भी जो समन्वय बना के कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां अगर कोई लोन का या ग्रांट का कोई प्रावधान है वो सूची में उनको उपलब्ध करा। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। Sir, nobody can dispute that
skill training is one of the most essential requisite in today's world. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, since the start of the Prime Minister Kaushal Vikas Yojana, how many are the total number of people who were trained have actually been placed or given jobs anywhere? And the second facet, sir, of the question is, Minister may answer them together. In the last, sir, 6 years, the expenditure budget reflects on the scheme that while the total money that was to be spent was about 12,000 crores allocated by the government, only 4,905 crores have been actually spent. The last year being the worst, in 23-24 only 502 crore was the actual expenditure. And sir, Minister, in answer to my friend Mr. Pathak's question, said he asked only one facet. I looked at the cumulative training even for last 3 years. As per your press release of 29th July 2024, the cumulative training data is also only 13,70,000. How are we going to train crores and crores of young people in this fashion? So these are three related facets, sir, that I would like Honourable Minister to answer. Honourable Minister. Honourable Chairman, sir, the question posed is on the placement record. So we are now currently implementing the 4th phase of PMKVY. And Honourable Member is also aware that in the first 3 phases, some of the payment outgo to our training partners was linked to them tracking the candidate and reporting their placement. Accordingly, some placement figures are available with us. Under PMKVY 1, 2 and 3, in those phases, out of a total trained of 71 lakhs, the placement record is of 43% of 24,37,000. Sir, post that in phase 4.0, our entire focus has been to shift our training towards more recognized educational institutions as what is a mandate given to us by NEP. Accordingly, even in schools, there is PMKVY training that our students are undergoing. It is very evident that the school children will never be reported placed, which is why the placement figure today in PMKVY 4 does not fully capture the data. Our approach now is to completely link our skilling programs in a transparent manner, bring it in a flexi model as much as possible. Entire training cycle, life cycle is now put on Skill India Digital Hub, which is OTP enabled, Aadhaar linked. And we encourage our student base to continuously invest in themselves, continuously look at their skilling, reskilling and upskilling. The entire ecosystem is completely transparently put on that portal, which is now also a DPI. So therefore, the pointed question on placements, what we have on record is what I have informed the members. Regarding his third query, I could not really understand, because 1.6 crore beneficiaries under PMKVY, that is the total number that we have trained over the years. Regarding fund flow, sir, the Honourable Member is not really wrong, but we have to understand that during COVID, like in the education system, even in the vocational training system, there was a lot of disruption. Subsequent to that, recently the Cabinet has given approval to our scheme from 2022 to 2026. Therefore, there was some lag in the approval of the appropriate authority, which is why the spend was not matching the requirement. But I assured the Honourable Member and through him the House that now our pace of progress has gone up. Thank you. Supplementary number 5, Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Honourable Chairman, sir. Through you, I would like to ask the Honourable Minister if there is, because the main reason why these skill development programs sometimes do not reach a conclusion, a logical conclusion, is because of the mismatch of the demand and supply. Where is the demand of jobs and the supply that is being created through skilling? So is there any proposal or provision under the ministry to create a data bank or a grid which will match the demand and supply gap where people between job seekers and the job opportunities that seek? Appointed question. Sir, it's a very good question. Under our ministry, there are 36 sector councils. The governance structure of all of these sector councils, which are working as verticals, is that they are manned by leaders of industry.
And these are the same people who are going to be hiring people and giving jobs. So therefore, they have an understanding of what the future direction is, where the skill gaps are. The mandate given to each one of these sector councils is to conduct skill gap surveys on a regular basis. In fact, NSDC has also organized an international skill gap survey across countries, also looking at outward migration and where the possibilities are. But I take the suggestion also that we need to integrate our entire skill programming. Instead of being prescriptive, project-oriented basis, it should be based on actual skill gaps. And it should be dynamic. Thank you. Question number 332, Shri Tiruchi Shiva. Sir, question number 332, sir. Honorable Minister. Answer is laid at the table of the House. Supplementary number 1, Shri Tiruchi Shiva. Sir, it's a very important question, sir. All questions are important. Yes, sir. Actually, we were seeking for a short duration discussion, but we couldn't reach that. It's okay, sir. Sir, to my deep part of my question, whether any consultations with the state governments and academic institutions have been conducted. The minister's statement reply consists of as part of consultation process on the draft UGC Regulations 2025, Vice Chancellors of Central Universities from all states were consulted, and it was also shared with all Principal Secretaries Higher Education of all states, Chairman of all State Higher Education Councils, IIT, sir. So consultations have been had with only the Vice Chancellors of Central Universities, and with the state government principal secretaries, it has only been shared. Sir, I think the minister is very much aware that lot of apprehensions, concerns have been raised by various stakeholders, the educators, students, and state governments, and especially with regard to the appointment of the vice chancellors. The vice chancellors are appointed now. The UGC, as per, of course, the UGC has powers to draft rules for appointment of staff and other things. Even for the GER, the gross enrollment ratio for higher education in 2037, the target of union government is 50%, sir. But in 2025 itself, Tamil Nadu has reached 48%. So many state governments are performing very well. And in the appointment of the vice chancellors, now the chancellor, that is the governor, and eminent persons appointed by the UGC will be in the select committee who will select the vice chancellor. And moreover, the vice chancellor need not be, sir, the question for this basic is necessary, sir. The vice chancellor need not have an academic background. Sir, the state governments have no role in the appointment of the vice chancellor. The colleges are situated in the state government's jurisdiction. They construct the infrastructure, they pay the staff members and pay scholarships, but they have no role in the appointment of the vice chancellor. My question is, why the state government has not been given any role, and how a non-academic person can be the vice chancellor of a university and can lead the colleges? Honorable Minister. Chairman, sir, Honorable Lord Member has put 3 questions. Let me try to answer all the 3 supplementary. First, have you ever consulted with the state governments or any other stakeholders? Yes. Sir, with utmost politeness I can inform, 10 government, first of all, UGC has all authority to come out with reformist regulation timingly. This is a proposed draft regulation sets envisioned by UGC, which is a statutory autonomous body. They put it in public domain. It's open to everybody, to all stakeholders. And rightly, Honorable Member has mentioned, UGC has communicated this to respective state governments through its Principal Secretary Education, through Chief Secretaries, and all central universities, Vice Chancellors mentioned as a nodal person to coordinate these things. Beyond that, more than 10 state government has participated and given their suggestion. More than 52 universities, cutting across all kind of universities, central universities,
state university, private universities, deemed university, all kind of university has given their valuable suggestions either way. Some of them have appreciated, some of them have some suggestions, some of them have some disagreement. But we accept everything as a suggestion, and all these things are on the consideration level. The part one is the consultation. It's a widely consultated approach we have taken, and now it is also the reform draft already we have put it into the UGC has put it in the public domain, and anybody can suggest on that also. That's a regular affair of UGC. Part two of the question, whether how do you select a vice chancellor? Sir, there is nothing new. Since our country after got independence and before independence, what is the role of the governor of the state? What is the role of how to select the vice chancellor? What is the role of UGC? This all has been deliberated, discussed very detailed, in a detailed manner. Sometimes some state government differ with the approach. They went to court, High Court, Supreme Court. On all the occasions, Supreme Court has given a blanket direction. The suggestions of UGC will prevail upon everything. Number two, in recent past, due to our nature of our federal structure, due to the nature of our democracy, unfortunately in few areas, few states, 2-3 states, the new debate has started. Who will select the panel of the experts? Whether government, honorable governor, being the chancellor of the university, will select by on its own, or will take in help of state government. Let me inform to this August House through you, sir. The Secretary of Governor is a representative of respective state government. He is quite eligible, authority, all authority are there with him to coordinate between governor's office and chancellor office and state government. We can't say there is no coordination between respective state government and the chancellor's office. And this is an old practice. This is number two. Number three, how do you select a non-academic eminent person as a chancellor? Sir, let me put forth one point of view. Within this August House, lot of people, they may be in the public life, they may be in the politics, they may be in the, but lot of, my dear friend Pathak, he is a professor of IIT. Coincidentally, he is a honorable member of parliament here. After retirement from this house, my wish he should not retire, he should elect regularly. But if he desired to go back to academics, what is wrong in that? Now in the Mr. Vikas, you are a good friend. This is inappropriate. Sometimes, One second, so I am not going to embarrass you. Sometimes truth is bitter, little bit bitter. Honorable Minister, my dear, one second. Dr. John Britas, not only this is inappropriate, you are a very experienced member. Let the minister complete his reply. And I have still to give opportunity to 3 members to ask supplementaries. But this time you will not be given this opportunity. No, that I think, Honorable Minister. Sir, time is changing. In the new era of technology, innovation and new order of economy, who will be the leader of university? In university's function, there are 2 sets of roles. One is academics, one is administrative. Now, time has come to blend both the things. Looking into this emerging trend of the globe, emerging trend of the need of the time, this is the need of the time. So rightly, I think rightly UGC has envisioned eminent persons should also from different walk of life should lead the university. These are the 3 polite answer of my understanding through you to House, sir. Honorable Minister, your replies are always polite. So now you are saying polite means it is more polite than earlier. Second supplementary, Shri Tiruchi Shiva. Sir, thank you very much, sir.
Sir, Minister rightly pointed out an example of Mr. Pathak. Yes, eminent person. He was a professor in IIT. Yes. And after his tenure in Rajya Sabha, he can go back. That's what we say, sir. He has an academic background. Honorable Minister has also wished him to continue here as much as he can. I too wish that. And then go back. That thing is, he has got academic background. That is it. He had been an IIT professor, so when he goes back, he has an academic background. Whereas what we say is, one who has been a PSU person, who has been in public administration, they could also become vice chancellors. That was my concern. Because an assistant professor, to become an assistant professor, 14 years have to be put in service. Then associate professor. Then out of research and experience, they will be elevated to professor. And they are elevated to vice chancellor. That would be very fine, Second sir. supplementary. But as he said, again, I think we are not yet settled mentally that this non-academic persons The Honorable Minister was very explicit. My second very explicit. The Honorable Minister has elaborately responded. Yes, sir. You may have a different point of view. Only Your point of view may be different. non-academic persons becoming vice chancellors will not suit to the future education. That's our stand. That's your point. We have made it. That's my point. Second is, sir, the UGC under the 1956 Act of UGC has got all powers. As the Minister said, I agree to that. But only with regard to the ground reality, sir. Sir, the education system now is 12th standard up to school, 3 years graduation, 2 years PG, then 2 years PhD or NET. But now it has entirely been changed. 11 years plus 4 years. First year, if a student goes out, he will get a certificate. Second year, if he goes out, he will get a diploma. Third year, if he goes out, he will given a degree. And he will be given a degree. And fourth year, he will get a honors. So multiple entry and multiple exit means a student who has got a certificate and has gone out can come back again and join after 2 years. So poor background people, students, the two teenagers who are tempted to take decisions out of emotional for many reasons. After 2 years of his college, he can stop to God. When the target is 50% GER in 2037, this system will totally make way for many dropouts. So, sir, why the UGC has not taken all these things into account? The thing is, the future will be very, very alarming, sir. This involves the students, that is the future generation. So what this will serve the purpose? This system will not, of course, help the education, higher education to compete with the multinationals. Honorable Minister. Chairman, sir, I can appreciate the concern of honorable member as a parent, as a guardian of the youngsters of our country. I can appreciate. But sir, whenever you adopt a new method, this debate is eternal. This was there when you are a young person. When today we are discussing all such things, and this question, very premise of this question should remain for next century also. When you are in a transition where you are going to approach a new model. But sir, we have to look into the present need, present trend, and also the future emerging trends. Looking into that, the chairman of the National Education Policy Committee was none else than Dr. Kasturi Rangan. He is an eminent scientist and a futuristic leader who can envision a huge future for all of us. On this background, rightly honorable member, multiple exit, multiple entry. Sir, degree is important, but Prime Minister Modi always saying all this thing, competency is also important. Being a young country, being a country of young people, being a skill hub in our country, my colleague, Mr. Chaudhary, just now you have permitted him to answer elaborately. If I blend both the things, we have to prepare ourselves for our country, we have to prepare ourselves the need of the entire globe as a skill hub, as a knowledge hub, as a competent place of competent people. Looking into that, we have envisioned nothing related to UGC. Honorable member is mentioning the new approach of national education policy. I appreciate his concern, but I am confident the new generation of this country will take up this challenge and come out with flying colors, sir. Supplementary number 3.
Shri Raiga Krishnaya. Respected Chairman, earlier PhD is one of the qualification for teaching faculty. Now it is removed. There is a demand to restore PhD, one of the qualification. Is there any proposal to restore the same? Now the PhD degree is a decorum degree. So PhD is also important degree for research orientation. In different fields, so many scientists, so many research scholars, there are innovative ideas, they are finding so many new outcomes. So, is there any proposal for imposition of PhD for teaching faculty? Honorable Minister. I appreciate the question of my dear colleague Krishnaya. I know he is a great advocate of social justice. One situation arises, sir. When we go for massive recruitment at assistant level, assistant professor level post, what we found, the competent persons in the constitutionally protected group like SC, ST and OBC, we did not found sufficient number of candidates in that category due to this precondition, PhD. Sir, a poor student from this background will not wait for a assistant professor's job and complete his PhD and join. The merit and competent people will not wait for that due to socio-economic condition. To take care of all these sections only, Government of India advised UGC and UGC has taken this rightful stand. Let us withdraw the condition of PhD at the entry level, but the person when he will go in his career appear for associate professor, for professorship, by that time he has to complete PhD. PhD should not be a precondition for entry level. In that way, it became restrictive to the constitutionally protected group people like SC, ST and OBC people. That's what now UGC has come out with this new approach. Supplementary for Shri Ramji Lal Suman. धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो एक्ट है वो एक्ट 1956 का है और सभापति जी उस एक्ट के मुताबिक अगर कोई फर्जी यूनिवर्सिटी पकड़ी जाती है तो उसमें अधिकतम जुर्माना 1000 रुपये है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से निरंतर ये आग्रह करता रहा है कि मेहरबानी करके ये जो 1000 रुपये का जुर्माना है इसको व्यावहारिक बनाइए, कम से कम 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, 5 साल की सजा। तो एक तो सभापति महोदय मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमें व्यावहारिक बनना चाहिए, ये दंड नहीं के बराबर है। दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहूंगा सभापति जी कि 1956 का जो एक्ट है उस एक्ट के मुताबिक किसी भी कीमत पर आप विदेशी विश्वविद्यालयों को हिंदुस्तान में आमंत्रित नहीं कर सकते। इस समय 2 विदेशी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं सभापति जी महोदय। मैं शिक्षा मंत्री से जानना ये चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो एक्ट है 56 का, क्या उसमें परिवर्तन करेंगे और किस हैसियत से ये विदेशी विश्वविद्यालय हमारे देश में आ गए, इसकी जानकारी देंगे। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, 1956 का यूनिवर्सिटी एक्ट ये कहती है समय के अनुसार यूजीसी अपने नियमावली में सुधार कर सकता है। उसी श्रेणी में सुधार करते हुए अनेक बार ये प्रश्न आया है कि क्या जो कम गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय के ऊपर जुर्माना किस हद तक होनी चाहिए, ये एक विवाद चली है। सब इस देश एक समय में शैक्षणिक स्वतंत्रता के बारे में, एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में, गवर्नेंस ऑटोनॉमी के बारे में हम पक्ष रखते हैं। दूसरी ओर सरकार क्या है कि डंडा लेके चलने वाला चाहिए क्या, ये अंतर्द्वंद शैक्षणिक परिवार में, शैक्षणिक जगत में निरंतर चल रहा है। लेकिन जो शंका सही है, इस अगर उसमें हम उस मानक में हम उसको निगरानी करेंगे तो शायद राज्य सरकारों के द्वारा चलने वाले अनेक विश्वविद्यालय कटघरे में आ जाएंगे। इसमें एक
मध्यावधि बीचों-बीच रास्ते, इसलिए नैक, एनआरएफ इस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाकी रहा अभी जो नया हायर एजुकेशन कमीशन की बिल आएगी, ये विषय में भी शायद कुछ रास्ता निकाला जाएगा। बाकी रहा, जैसे मैंने कहा कि यूजीसी की 1956 एक्ट बार बार खुद को सुधार रही है, रिफॉर्मिस्ट रास्ते पे लेके गया है। आज की आवश्यकता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ हमारी सरकार ने, जब हमने कहा है एनईपी में हम इंटरनेशनलाइजेशन ही करेंगे। सर, इस बात को हम अस्वीकार ना कर, इस देश की 14 लाख से 15 लाख विद्यार्थी विदेश में पढ़ते हैं। अच्छा खासा विदेशी तिजोरी में हमारी संसाधन जाती है। धीरे धीरे हमें उस विषय को ध्यान में रखते हुए देश में हायर रिसर्च इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में ले आना ये उचित होगा। ये सोच के यूजीसी ने अपना रेगुलेशन को रिफॉर्म किया। हमने 2 नहीं, अभी तक भारत में 3 फॉरेन यूनिवर्सिटी देश में काम कर रहा है और 50 से ज्यादा वैश्विक क्वालिटेटिव गुणवत्ता वाले फॉरेन यूनिवर्सिटी राज्य देश की विभिन्न राज्यों के साथ चर्चा करके यूजीसी की दफ्तर तक पहुंचे हैं। हम हमारी जो मानक रखा है उसको इवेल्युएट करते हुए हम लोगों ने उनको अनुमति भी आने वाले दिनों में देने वाला है। ये विद्यार्थियों के हित में है। सप्लीमेंट्री नंबर 5। करके कठोर दंड का प्रावधान मंत्री जी करेंगे। सुनिए सुनिए, माननीय रामजी लाल जी सुमन, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिनियम में प्रावधान है कि यूजीसी समय समय पर संशोधन कर सकती है तरीकों से। आप विधायिका से 77 से जुड़े हुए हैं, सबसे अनुभवी सदस्य हैं एक तरीके से। मैं सबसे अनुभवी इसलिए कह रहा हूं एक तरीके से क्योंकि मेरी नजर वाइको जी पर पड़ गई, वो 1974 के हैं। The honorable minister, 1 second, this is not the practice, please. Honorable member, the honorable minister has very exhaustively answered your question, and sometimes we need to appreciate for exhaustive answer. Supplementary number 5, Dr. John Britas. Thank you very much, sir. Sir, let me just say that I have huge respect for the honorable minister. All of us have. Yes, sir. I intervened because of the agony of my state, that is Kerala. Sir, governors as chancellors have been always contentious, controversial. Governors have always? Sir, governors as chancellors have been always contentious and controversial precisely because there has been... 1 second. You can be kind to your chairman. Yes, sir. I have been governor for 3 years. Sir, except people like you, sir. Thank you. Sir, my question is very simple, sir. So the UGC draft guidelines gives overriding powers to the governor for selection and search and selection committee. That's why the whole concern that's been expressed here. Since Tiruchi Shivaji has asked the question, my question would be on a different level, sir. So the draft UGC regulations 2025 proposed the removal of 10% cap on contractual appointments, which threatens the academic job security. Simultaneously, sir, another issue which I had flagged earlier, the introduction of professors of practice who are exempt from search credentials. My question is that these 2 segments are exempt from the reservation policy. Will it not affect the social justice which we adopt? Is the minister concerned about this? Thank you, sir. Honorable Minister. Chairman, sir, with the two questions, let me try to answer the part 1. What we found with this great debate of authority of chancellor, again I am little bit frank. Who is the secretary of the chancellor and the only governor? He is a senior officer of the respective state government. I think there should be a cordial communication between them. There is
there is cordial communication between the Chancellor's office and Governor's office and Honorable State Government's office. What is happening, sir, in few places, I don't want to name the state, few places, influential person of the Chief Minister office, they tried to appoint their own wife, own cronies, as a Vice Chancellor, as a lecturer. How is Honorable Governor or Honorable Chancellor keep quiet, sir? He will certain that Honorable Authority and office will raise question on that. That is the pinching. That exactly pinching. Then the question of interference. Then the great word of democratic interference. All these lofty words are coming up. So this is unfortunate. And this is a usual practice, and everywhere, many states are going to up to Supreme Court. Finally, Supreme Court categorically, time and again has re-emphasized the authority of UGC. So let us, in a healthy democracy, we know what is the problem, and especially I have a very understanding between my dear friend John Britas on also some of this kind of sensitive issue. I respect his sentiment also, but he knows what I want to say, sir, through you. Number two, sir, regarding social justice issue, it is less said, it will be okay for my dear opposition friends. Sir, till 2018 in appointments of assistant, associate and professor post in universities, there is no mandatory rule for constitutional protection to this SC, ST, OBC group. For the first time, Prime Minister Modi enacted a visionary policy, visionary act, through a bill, through an act, enacted regulations. There cannot be no category of not found suitable candidate. And in academic era, the kind of appointment we have for a temporary period, if some ad hoc appointments are there for 1-2 years, we have to realize the situation, because many more universities are coming up, many more quality institutions are coming up. Our talented people are finding their own choices according to their career plan. To continue the show, continue the academic atmosphere in the campus, the institute have to give in some kind of temporary arrangement, with they can maintain the constitutional roster. In that also we can plan, and all these things are at the draft level. It is a suggestion. I will inform UGC to look into that. Question number 333, Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. धन्यवाद. प्रश्न क्रमांक 333. Supplementary number 1, Dr. Anil Sukhdev Rao. धन्यवाद सभापति महोदय. आज़ादी के बाद में भी ऐसी विभिन्न जनजातियां थी कि जिन तक विकास नहीं गया था. 2023 में हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री, इन्होंने जो पीवीटीजी है, प्रिमिटिव जनजाति, उनके लिए पीएम जनमन योजना शुरू की. उसके बारे में मैं अभी एक आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये पीएम जनमन योजना के माध्यम से महाराष्ट्र में जो जनजातियां हैं, विशेषतः मेलघाट, गढ़चिरोली, पालघर, ठाणे और नंदुरबार, इस एरिया में इन जनजातियों के आर्थिक, शैक्षणिक और महिला सशक्तिकरण की कौन सी योजना चलाई जा रही और उसमें कितना व्यय हुआ है और उससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? माननीय मंत्री जी, सर, ये पीएम जनमन जो योजना है, ये पीवीटीजी डेवलपमेंट का एक नया स्वरूप में इसको लागू हो रहा है. प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्देश दिया है कि जो 75 पीवीटीजी देश में है, जिनका फैलाव आपका 217 ब्लॉक में, ये जो है इनका पूरा सैचुरेशन हो, पूरा संपूर्ण विकास हो. उस गांव का, जिस गांव में ये काम शुरू होगा, उसमें आवास सबको मिलना चाहिए, रोड होना चाहिए,
बिजली होना चाहिए, अगर बिजली डायरेक्ट नहीं जा रहा है तो सोलर सिस्टम में भी होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, 11 इंटरवेंशन इसमें होना है और 9 मंत्रालय इसके लिए कन्वर्ज करेंगे, उसको मिल के काम करेंगे। इसमें है आप गढ़चिरौली एरिया का डिटेल में पीवीटीजी का क्या हुआ है एग्जैक्टली अभी मेरा पास तथ्य नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को मैं लिखित में डिटेल में उनको मैं भेज दूंगा। सप्लीमेंट्री नंबर 2। धन्यवाद सभापति महोदय। इससे ही जुड़ा हुआ आदिवासी जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम है और इसके द्वारा जनजातियों की आय बढ़ाने की और स्वयं रोजगार के लिए योजनाएं कार्यान्वित होती है तथा आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना की भी कार्रवाई होती है। तो इसके बारे में कौन सी योजना है उसका ब्यौरा आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृपया दें। माननीय मंत्री जी, जनजाति महिला का सशक्तिकरण में आपका एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम करेंगे उनके लिए सॉफ्ट लोन है, कम पैसा में उसको किया जाएगा। बंधन एक केंद्र जिसके लिए कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वहाँ का प्रोडक्ट को वो लोग अगर बना के उसको मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग करने के लिए ट्राइफेड बोल के एक संस्था है उसका वो जिम्मा लेता है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये सब है। उसके साथ साथ वो कहीं भी आपका बेम्बू क्राफ्ट भी कर सकता है, टेक्सटाइल में भी जा सकता है, बाकी जो भी काम वो करना चाहते हैं उसके लिए फाइनेंस सॉफ्ट फाइनेंस है, बहुत सारे कम लोन दिया जाता है और उसे ग्रुप के हिसाब से वो लोग काम करेंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्रीमती मौसम बी नूर। Chairman sir, through you I would like to ask the Honorable Minister whether it is a fact that under PM Janman till November 2024 only 12% of the houses sanctioned have been completed and only 0.14% of roads sanctioned have been completed. If so, what other sanction missions targets remain incomplete and underachieved? Thank you, sir. Honorable Minister. ये फिगर आपने ठीक नहीं बताया, मैंने आपको हाउस होल्ड के बारे में जो बता रहा हूँ उसका हाउस होल्ड का टोटल अचीवमेंट जो हम लोग का है ये आज तक पीवीटीजी का हाउस होल्ड हम 11,48,118 ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें से आपका 2,911 आपका हैबिटेशन में ये काम चल रहा है। हम लोग का बाकी हैबिटेशन में काम बाकी है, लेकिन इसका परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल से 60-70% का तक का ये आता है। सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्री नीरज डांगी। श्री ए रहीम। Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Sir, as we know that this is a technological era, the digital divide poses a significant barrier to the overall socio-economic well-being of particularly vulnerable tribal groups. What infrastructure developments have been undertaken under this scheme to bridge the digital divide among the PVTGS? Additionally, the Kerala government has launched its flagship project K-Phone to ensure universal internet access. Will the union government provide financial and technological assistance for the implementation of the K-Phone project in PVTG inhabited areas? PVTG में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए आपका फाइबर केबल नेटवर्क उस पंचायत में दिया जा रहा है, लेकिन ये सदस्य महोदय कुछ नया टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं, इसका डिटेल लिखित में मैं इसका उत्तर दे दूंगा। सप्लीमेंट्री नंबर 5 श्री संजय सिंह। धन्यवाद माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि 15,000 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों के माध्यम से आदिवासी समाज के उत्थान और विकास के लिए खर्च किया जाएगा, लेकिन इसका कोई डिटेल्ड आंकड़ा और किन विभागों ने कितनी धनराशि आवंटित किया और कितना खर्च किया
वो नहीं दिया गया मान्यवर, तो उसकी क्या स्थिति है वो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। नहीं, माननीय सदस्य थोड़ा रॉन्ग बताए। ये 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 15,000 है इसमें से सेंट्रल शेयर है, और 7,000 कितना शेयर है ये राज्य सरकार का है। आपका स्कीम वाइज कितना पैसा खर्चा होगा इसको मैं बताता हूं सर। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में सेंट्रल शेयर 7,377 करोड़ का होगा, और राज्य ने 4,334 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। तो रोड कनेक्टिविटी के लिए भारत सरकार ने खर्चा करेगा 5,040 करोड़ रुपया, राज्य सरकार खर्चा करेंगे 2,960 करोड़ रुपया। ऐसे जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार 792 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, राज्य सरकार 703 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। ऐसे नेशनल हेल्थ मिशन में जो मोबाइल मेडिकल यूनिट चलेगा इसके लिए भारत सरकार 427 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, और राज्य सरकार 251 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। ऐसे ही आपका सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन प्रोजेक्ट में भारत सरकार 885 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, जबकि राज्य सरकार 520 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। आंगनबाड़ी सेंटर में जो महिला और शिशु विकास का है इसमें भारत सरकार 300 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, और राज्य सरकार कोई खर्चा नहीं करेंगे, ये पूरा के पूरा भारत सरकार इसको करेंगे। न्यू सोलर पावर और हैबिटेशन एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये 515 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्चा करेगा, राज्य सरकार इसमें कोई खर्चा नहीं करेगा। ऐसा मोट में अभी तक जो एक्सपेंडिचर हुआ है ये आपका 8,768 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्च हो चुका है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मिला के। बाकी जो पैसा खर्च होने वाला है ये 3 साल का स्कीम था, तो इस साल का ईयर एंडिंग का इसमें मिला नहीं है। ये सबको मिलाने से हमारा जो टारगेट है हम 26 तक इस प्रोजेक्ट को हम सेचुरेट करके दिखाएंगे। संतुष्ट मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं। अच्छा सर, लेकिन उन्होंने तो बता दिया कि 24,000 करोड़ का जो अलॉटमेंट हुआ था उसमें सिर्फ 8,000 करोड़ खर्च हुआ है। ट्रांसपेरेंटली सब कुछ आपके समक्ष रख दिया, और आपका चेहरा बता रहा है कि मंत्री जी ने बिल्कुल सही जवाब सटीक तरीके से दिया है। संजय सिंह को संतुष्ट करना आसान नहीं है। ये फॉर्मूला मंत्री जी के पास है, इनसे फॉर्मूला लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 334 श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। ऑनरेबल मिनिस्टर। सदन के पटल में उत्तर रखा गया है। सप्लीमेंट्री 1 श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। सर, हमने जो प्रश्न पूछा था उसके भाग ग में स्पेसिफिकली ये पूछा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके उत्तर में मंत्री जी ने जो ब्यूरोक्रेटिक जवाब दिया है उसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि देश के 3 राज्यों का समग्र शिक्षा अभियान के तहत लगभग 4,000 करोड़ रुपए का बकाया केंद्र सरकार सिर्फ इसलिए रोके हुए है कि इन राज्यों में पीएम श्री स्कूल के मॉडल को नहीं अपनाया है। मेरे विचार में ये कतई उचित नहीं है, और आपके माध्यम से हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल का सर्व शिक्षा अभियान के तहत बकाया कब तक जारी कर दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी तो नया वित्त वर्ष शुरू हो गया, आज 2 अप्रैल है, इसलिए तो हम बात करेंगे 25-26 का। निश्चित रूप में आदरणीय सदस्य जी ने जो पूछा, उन्होंने कहा कि 3 राज्यों की बारे में उन्होंने उल्लेख किया। अभी इस सदन में मैं उल्लेख कर सकता हूं, शायद वो 3 राज्य भी नहीं रहेंगे, धीरे धीरे उनमें से भी मन परिवर्तन हो रहा है। एक राज्य तो उनमें से जल्द ही फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फ्रेमवर्क में ज्वाइन करेंगे, इसलिए ये कोई विषय मेरे दृष्टि से ज्यादा तक थोड़ा चुनाव है कुछ राज्यों में आने वाले दिनों में, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ पोजीशनिंग हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अवगत करवाना चाहूंगा हाउस को। संविधान सभा के उपरांत जिस प्रकार के व्यापक विमर्श के साथ एक राष्ट्रीय मसौदा हमारी संविधान के रूप में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनी,
ऐसे ही डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विजन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तित किया। व्यापक विमर्श के साथ आज सभी राज्य, भले ही जो राज्यों का उन्होंने नाम लिया और मैंने कहा राजनीतिक पोजीशनिंग है, उन राज्यों में धरातल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, राज्यों के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। पिछले दिनों में इस पवित्र गृह में जब बजट की डिस्कशन हो रहा था, उसकी तथ्य मैंने सामने रखा था। मेरे दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके भारत में सरकारों के अंदर, समाज के अंदर, विशेष करके नई पीढ़ी के अंदर एक अत्यंत उत्साह की वातावरण है। तेजी से उसकी स्वीकृति दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। मेरा जवाब तो आया नहीं सर, आप प्रोटेक्टर हैं हम लोगों के। मेरा अनुभव यह है भाषण जवाब आता तब भी ये कहा जाता है कि जवाब नहीं आया। नहीं, मैं तो सर पॉइंटेड सवाल पूछा था, कब तक दिया जाएगा? वो अगर आपको मिला है तो हमको सर बताया जाए। उन्होंने बताया मैं कमजोर विद्यार्थी हो सकता हूं सर। माननीय मंत्री जी ने कहा एक वित्तीय वर्ष तो समाप्त हो गया, और आपने ये भी कहा कि आज 2 अप्रैल है। जवाब आ गया। तो सर 1 अप्रैल सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय सदस्य, 1 अप्रैल को ये आंसर होता तो सर समझ सकता था, आज तो 2 अप्रैल है। सर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फाइनेंसिंग आज भी एक बड़ी समस्या है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2016 में हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की स्थापना की थी। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि हेफा का वर्तमान में क्या स्टेटस है और किस तरह से यह हायर एजुकेशन में फाइनेंसिंग कर रहा है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये एक अलग प्रश्न है, मैं उसकी सविशेष ब्यौरा माननीय सदस्य को हेपा की आज की स्टेटस क्या है मैं जल्दी ही आपके माध्यम से उनको अवगत कराऊंगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, हेपा 2016 में भारत सरकार की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, हॉस्टल्स बनाना, नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना, नया क्लासरूम्स बनाना, ऑडिटोरियम बनाना, प्लेग्राउंड बनाना, ये सारे को ध्यान में रखते हुए एक न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाया गया है, जिसको लगभग सभी भारत सरकार की फंडेड इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। ये हमारी अनुभव है, मैं बाकी ब्यौरा डाटा के साथ आपके माध्यम से बताऊंगा। अवगत कराने की समय अवधि परसों तक बता दूंगा। हाँ ठीक। सप्लीमेंट्री नंबर 3, डॉक्टर कानी मोजी, एनवीएन सोमनाथ। हाय, वेलकम। Thank you, Chairman, sir. Sir, the National Testing Agency was given a huge responsibility of conducting nationwide entrance tests like NEET, CUET, UGC. This has created a dismay and a complete lot of trust, because this is a very lean agency which cannot take up that much of responsibility. My question is, sir, why can't the government restrict testing for entry to its own institutions and decentralize where states fill up their own seats on the basis of the marks scored in the state board examinations? Honorable Minister. Chairman, sir, my esteemed colleague, dear sister Kanimoji is a very intelligent person. She put that I think no one will disagree. The entire house will agree to this. Sir, the basic point of the question, core of the question is, why don't you give it the NEET examination, dismantle the NEET examination and give the authority to state government? This is the base core of the question. Sir, this government is not responsible for this kind of model. Honorable Supreme Court has given a direction. The medical entrance test will be centralized, and the previous UPA government has started this model. We have to carry forward that. She was very much part of that government. She could have prevailed upon. In those days, with the leadership of their ruling alliance, they could have prevented it that. But we have to carry forward a lot. NTA is doing tremendous job with our experience. Yes, there are certain challenges in the previous years, but we are improving every year. It will be a very robust entrance testing mechanism for the country. But Honorable Minister, can the government part with its executive authority for a court? This is an issue I have indicated to the House several times. Governance in democracy has to be only by executive.
Because executive is accountable to parliament, accountable to people in elections. How can executive governance be done by any other agency? And therefore, even if something significant has come from any other institution, this is an area exclusive to executive, because executive is elected by the people to govern the nation, and therefore give attention to this also. It's a larger issue beyond your ministry, but we cannot have in the country executive governance beyond the government. The government is ultimate. Supplementary number 4, Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया. And now you know why I gave preference to Dr. John Bitas. जी सर, शुक्रिया सर. माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पहले तो संवेदना है माननीय मंत्री जी से. माता पिता के ना होने पे आदमी अचानक बड़ा हो जाता है, तब तक बच्चा ही रहता है. नहीं, वैसे भी आपने ठीक कहा. आपके पिताजी का मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए और आपकी अनुपस्थिति इस वजह से हम सबको बहुत खल रही थी, और ये कहकर आपने बहुत ही संवेदनशीलता दिखाई है. जी ये सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, एनईपी में डिजिटल एक्सेस पे बहुत जोर है, लेकिन हमें ये हकीकत भी हम सब जानते हैं, आंकड़े हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं या ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे हैं, क्या सरकार इसके लिए अतिरिक्त कुछ कर रही है ताकि डिजिटल डिवाइड की ये जो क्रूर हकीकत हो उसको एड्रेस किया जा सके? मुझे इसी साल बजट में भारत सरकार ने घोषणा किया है कि भारत की सभी सरकारी हाई स्कूल में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए प्रचुर मात्रा में वित्तीय अनुदान की व्यवस्था किया गया है. Question hour is over. Yes, I have checked again, it is over. The Boilers Bill 2024, Shri Piyush Goyal ji to move that the amendments made by Lok Sabha in the Boilers Bill 2024 be taken into consideration. Respected sir, with your kind permission, I move that the following amendments made by Lok Sabha in the Boilers Bill 2024 be taken into consideration, namely, in the enacting formula, that at page 1, line 1, for the words 75th, the word 76th be substituted, and in clause 1, that at page 1, line 5, for the figure 2024, the figure 2025 be substituted. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Shri Piyush Goyal ji to move that the amendments made by the Lok Sabha in the Boilers Bill 2024 be agreed to. Honorable Chairman, sir, I move that the amendments made by Lok Sabha in the Boilers Bill 2024 be agreed to. Motion moved. The question is that the amendments made by the Lok Sabha in the bill be agreed to. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are agreed to. Now the Immigration and Foreigners Bill 2025. Shri Nityanand Rai to move that the motion for consideration of the Immigration and Foreigners Bill 2025. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप प्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए. आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे मैडम? उत्तर के समय अंत में जो आएगी. हाँ, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है आपका? ये Thank you, Deputy Chairman, sir. It's under Rule 29, List of Business. Yes, tell me. So the list of business has been circulated. We have 2 days of the session left, sir. The BSc has allocated 3 hours
for the discussion, the presidential proclamation, the statutory resolution on the proclamation of President's rule in Manipur, sir, and 8 hours for the Waqf bill, sir. Sir, we don't know in the list of business when the Manipur issue is going to be taken up. It's a very sensitive issue, number one. 2 minutes, sir, just 30 seconds. And second, sir, we've also been assured... Saket, you have got it, please. No, let me just give me 10 seconds to finish my point of order. Let me finish the ruling. I'll take 10 seconds more, sir. Please. Also, we've been assured by the government on a short duration discussion on the duplicate epic card matter. We only have 2 days left in the session, sir. We would like to be invited on when it will be taken. Honorable Chairman presided BSc meeting and he has informed the House already. Thank you. Now I will call list of speakers. Motion moved. Dr. Abhishek Manu Singhvi, please. Honorable Chairman, sir, distinguished members of this august House, I rise to oppose this bill and seek substantial changes in its pernicious character. It is clearly designed for ulterior motives by a control freak sarkar bent upon sending out a message of fear through the architecture of omniscient Orwellian surveillance for foreigners. As I will presently demonstrate, sir, this bill is a true work of art. A work of art for excessive, uncanalized discretion, for overbroad delegation, for delightfully vague phraseology, for deliberate omission of any alternative efficacious oversight mechanism, for elevation of a constable to the level of a super commissioner, a license for harassment, and all based on the fundamentally false assumption that foreigners have no rights under the Indian Constitution, as also the decimation of all notions of privacy and autonomy of an individual. Sir, members of this august House, from dreams of being a Vishwaguru and enveloping the world in India's embrace of soft power, from talking of Atiti Devo Bhava, this bill sends a message that all foreigners are potential criminals, to be viewed with serious suspicion by India, where India is to act as an unwelcome fortress for its unwanted non-guests. Sir, if these words seem too harsh, let me try to make each word good in a moment. Sir, let's look at excessive delegation. Excessive delegation to lowly officials with a humongous breadth of discretion on those officials is the visiting card of this bill. Start with the heart and soul of the bill, clause 3, which by the way has no predecessor in any of the earlier 4 enactments which this bill pretends to consolidate. 1920, 1939, 1946 and 2000. No predecessor is found of this section, clause 3. The first proviso to this clause 3 has a big non-obstant override to the whole clause by empowering the central government to refuse entry to or deport any foreigner on grounds of national security, sovereignty, integrity of India, foreign relations, and curiously, public health. So far so good. We understand these grounds, they are serious, and foreigners attaching to these grounds must be dealt with. It then adds, after these grounds, the universe of delegation. It says, quote, or on such other grounds as the central government may specify, unquote. It means, in other words, that the central government, as if it is this legislature itself, can add any number of grounds in the years to come by notifications and government orders to deny entry to foreigners or to deport them. By a process of executive extension, theoretically, grounds can be added to deny entry or stay in India, none of these grounds having been seen or approved by this august House.
which is the whole purpose of legislation. That's why I said excessive delegation. Then secondly, sir, comes the killer. The second proviso to the same section, clause 3 reads, provided further that the decision of the immigration officer in this regard shall be final and binding, unquote. सर, अमेरिका में इमिग्रेशन जज, कनाडा में अपील बोर्ड, भारत में यहां एक इमिग्रेशन अफसर का संदेह ही अंतिम फैसला है। कोई अपील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ एक अफसर की नजर और आपका पासपोर्ट, आपकी पहचान सब खत्म। यहां सर शब्दावली स्पष्ट है और सत्ता असीमित है। ये न्याय नहीं, ये निरंकुश राज है। एक अफसर का हुक्म अब आखिरी आवाज है। तीसरा बिंदु, पुनर्निरीक्षण करने की कोई भी ओवरसाइट संस्था कम से कम प्रथम स्तर पे तो देनी चाहिए। जब आपने इतने व्यापक इसमें अधिकार क्षेत्र दिए हैं सरकार को और एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को, बहुत कम ऐसे कानून देखे हैं मैंने जहां ऐसी संस्थाएं न मिले कम से कम प्रथम स्तर पे, खास तौर पर जहां किसी व्यक्ति के आने जाने और भारत में रहने पर इतना कड़ा प्रतिबंध लगाने का अधिकार क्षेत्र है, जो सिर्फ इस बार इमिग्रेशन अफसर को दिया जा रहा है। उसके ऊपर कोई ऐसा ओवरसाइट मैकेनिज्म नहीं है। ऑनरेबल गृह मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया था कि इमिग्रेशन अफसर के पावर्स उन्होंने ये कह के उड़ा दिए थे कि इमिग्रेशन अफसर पहले भी उसके विरुद्ध अपील नहीं होती थी और इमिग्रेशन अफसर 24 कसौटियों में, क्राइटेरिया में निर्णय लेता है। इस वक्तव्य में गलती है जो माननीय गृह मंत्री ने लोकसभा में दी इसी बिल पे, क्योंकि यह बात सही है कि पहले अपील नहीं होती थी, लेकिन पहले सेक्शन 3 भी नहीं था, ये अधिकार क्षेत्र नहीं थे जो अब आए आपके पास। इतने व्यापक इसमें बिंदु हैं जो पहले कभी नहीं थे। जब आपने अधिकार क्षेत्र पावर्स, कोएर्सिव पावर्स, इंट्रूजन बढ़ा दिया तो संस्था भी आवश्यक है। तो ये जो तुलना दी है माननीय गृह मंत्री ने लोकसभा में गलत है। उन्होंने अमेरिका की तरफ भी संकेत किया माननीय गृह मंत्री ने। अमेरिका की ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है बड़े स्पष्ट रूप से बताती है कि वहां लगभग 700 इमिग्रेशन जज हैं, 700, और उसके ऊपर एक बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स भी है जो इन इमिग्रेशन जजेस का पुनर्निरीक्षण करता है। और मैं ये कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता से कि अगर आप विकसित भारत बनना चाहते हैं तो हमें विश्व के उन सब विकसित वर्गों से उन सब की उत्तीर्ण चीजें लेनी चाहिए, न कि उनकी पिछड़ी कानून की आदतें। चौथा, ये जो आउस्टर क्लॉज कहते हैं कानून में, इसको फाइनल एंड बाइंडिंग को, जो इसमें डाला गया है, ये 200 वर्षों से मशहूर है, कई कानूनों में डालते हैं। और न्यायपालिका ने जब जब डाला है तो कहा है कि फाइनल कुछ नहीं होता कार्यपालिका के पास, फाइनल हमारा शब्द होता है न्यायपालिका का, न कि इमिग्रेशन अफसर का। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हमारी सरकार जानती है कि हमारी कचहरी कितनी चींटी की चाल से निर्णय देती है। यह भी जानती है कि इस कानून के अंतर्गत अनेक ऐसे याचक होंगे जो या तो कोर्ट कचहरी पहुंचने का सामर्थ्य नहीं रखते, या अधिकतम विलंब से जिनका मामला वैसे ही निष्फल हो जाता है, इनफ्रक्शस हो जाता है। तो इसलिए ये ओवरसाइट मैकेनिज्म आवश्यक था। पांचवा बिंदु, अनुच्छेद 3(2) के अंतर्गत कोई भारत से बाहर भी जाना चाहता हो, गौर करें, बाहर जाना चाहता हो, और यद्यपि उसके विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, वो अभियुक्त भी नहीं है, तो भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसका वीजा खत्म हो गया है। सेल्फ डिपोर्टेशन जैसा अभी एक भारतीय महिला विद्यार्थी ने किया यूएसए में, वो 3(2) के अंतर्गत असंभव है। छठा, ये तो हुई वीजा खत्म होने की बात। अब वीजा न खत्म हुआ हो, उसके अतिरिक्त किसी का भी भारत से बाहर जाना इमिग्रेशन अफसर के आदेश द्वारा रोका जा सकता है। बाहर जाने की बात कर रहा हूं, अंदर आने की बात नहीं कर रहा हूं। और इसके कारण इसमें, इस बिल में नहीं दिए गए कि किन कारणों से वो कार्यपालिका, वो इमिग्रेशन ऑफिसर ये ऑर्डर, आदेश दे सकती है। बिल्कुल, ये तो ये कहा गया है, वही मैंने कहा, डिलाइटफुली वेग फ्रेजियोलॉजी,
ओवर ब्रेथ ऑफ डेलीगेशन मैंने अपने ओपनिंग में कहा था, इसके शब्द हैं 3(2) के, और ऑन सच ग्राउंड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर स्पेसिफाई, और उसके साथ लगाया गया ये प्रोवाइजो, द डिसीजन ऑफ द इमिग्रेशन ऑफिसर शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। सर, सेवेंथली, George Orwell, in his worst Orwellian nightmare, would not have paid so much attention to foreigners, tourists, students, and so on coming to visit the ancient land of India with all its diversity. Our own big brother, however, does more with a further delightfully vague and blanket language of clause 3(3). I quote, "The immigration officer may examine the passport or other travel document and visa of a foreigner during his," now mark these words, "during his entry into, transit through, stay in, movement within India, and also require him to furnish such information as may be necessary and appropriate," unquote. Sir, is this not the worst kind of license for arbitrariness, for harassment, for fear and intrusive behavior by a bureaucracy already known for its excessives and already functioning under a control-freak Sarkar? What is necessary and appropriate information is left to this officer, because he can ask anybody traveling from Goa to Bombay or from Khajuraho to Kashmir. What is necessary and appropriate information is left to this officer, not merely at the entry point, but right through the entire movement of the foreigner in India. Sir, it is not as bad as Indians and Pakistanis subjected to reporting restrictions in each other's countries. And certainly, personally, I don't care if you subject Pakistani visitors to it. But should we be even remotely moving in that direction for all other countries? Eighthly, with no appeal, no oversight, no accountability, just raw, unchecked power in the hands of a few, who will ensure that no foreigner is unjustly detained weeks after lawfully entering India. No family will be torn apart by bureaucratic overreach. Let us take an example of an over-enthusiastic bunch of teenage foreign tourists get into a heated political debate and vigorously criticize this government, God forbid the thought. You don't need to make out a separate penal offense under our Sahitas. You can put the fear of God in those teenagers holidaying in Goa or Khajuraho through the immigration officer, and more importantly in all the friends of this teenager and the future travelers, by selectively harassing, detaining and possibly deporting them on such vague phraseology. Mere suspicion can thus lead to all kinds of action with no adjudication worth the name. तो जज इसमें है नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई अपील बोर्ड नहीं है, कोई संस्था नहीं है। ताज्जुब है मेरे इस सैफ हयात पर, ताज्जुब है मेरे इस सैफ हयात पर, जहां फैसले होने थे वहां सजाएं मिली। Ninthly, sir, clause 7 is one of the most egregious examples of excessive delegation coupled with overbreadth. It says, quote, "By any order, direction or instruction, to prohibit, regulate or restrict the entry or departure of foreigners into or from India," unquote. No guidelines, no limitations for such instructions, orders or directions. And they are certainly not limited to the specific tests of national security, sovereignty, integrity, foreign relations, with which I am not quarreling. These are untrammeled, uncircumscribed and unfettered language, phraseology and clauses. The opening part of the clause is without boundaries, and even the particularized sub-clauses in 7, clause 7 if you have it, seek to control the very facet of the existence of that poor foreigner. A few examples. It specifies, it can require the specification of times and routes by which a foreigner can enter, clause A. It can prohibit his departure, clause B, as I already discussed. It can stipulate that he can be in India only at places specified, clause E. F requires him to present himself for examination anytime, anywhere. F small 4 asks him to report to authorities at specified times and days. F5 requires biometric information. F6
All this is mandatory, heavy penalties, prosecution. F6 requires subjecting himself to medical examination. Oh my God. And this is delightful. Last one, prohibits him from associating with persons of a specified description. This word is specified description. What is specified? इमिग्रेशन अफसर वैसे कह सकता है किसी कांग्रेसमैन से बात नहीं करना, ये भी कह सकता है। आपकी शक्ल ठीक नहीं है। हेलो मंत्री, जरा सुनिए। As may be specified, unspecified. Tenthly, honorable members, was I wrong to call this a control freak sarkar? Are these not mechanisms, sir? मंत्री महोदय सुनिए, मैं दोनों आंख को खुली रखकर दोनों कानों से स्थिर मन से सुन रहा हूं। मैं आपको आश्वासन नहीं, अभी आपको जवाब देना, बाद में नहीं। आप बोले। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी मैं नहीं कह रहा हूं आपको। मालूम होता है आप बोले। करे नहीं कुछ। प्लीज रेणुका जी, आग्रह सीट पर बैठ करना बोले, बड़ी वरिष्ठ मेंबर है आप, प्लीज। मेरा सौभाग्य, आपस में कमेंट नहीं, प्लीज। मेरा सौभाग्य, प्लीज प्लीज। मेरा सौभाग्य है कि आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि इतने ध्यान से सुन रहे हैं आप। Tenthly, honorable members, was I wrong to call this a control freak sarkar? Look at the thinking behind this bill. Does it think of foreigners as cattle or as en masse criminal gangsters? Is it so insecure that it wants this kind of disgusting suraksha chakra all around itself? Where are the standards, the boundaries, the tests for exercise of this mammoth power? Should we all rely on the good sense either of the sarkar or of the constable or of the immigration officer, that none of these open-ended words and clauses will be abused? Sir, 11th, the trinity of clauses, in particular 8 bracket 3, 9 and 10, 8, 3, 9 and 10, subcontract big brothers 24/7 surveillance of the foreigner to interesting entities. They subcontract surveillance 24/7 beyond Orwell to the landlord of premises where the foreigner stays. Oh God! कभी गलती करके किसी foreigner को घर पर ही रखिएगा. To the educational institution where he studies. To every hospital, medical institution and sleeping facility where he seeks medical help. Any and every information unspecified and unparticularized in the act is left for the future discretion of the officer, and it must be furnished by service providers like landlords, hospitals, colleges, universities on strong pain of penalty prosecution. Large slices of civil society, friends, are therefore mandatorily by law co-opted as snooping partners with Big Brother on an all-India 24/7 snooping exercise to all foreign visitors to India. 12th, in this all draftsman architecture, the draftsman seems to have forgotten that we have a small little book called the Constitution of India and some of its core provisions. He forgot that unlike several developed nations, and this is very important, India is not developed in many ways, but in these manners it is more developed than other countries. Unlike several developed nations, we hold our head proud and high as a democracy because we guarantee several rights to non-citizens as much as to citizens by the Constitution. Yes. Many other countries limit it to citizen only. Is this a part of the bill? Baba Sahib, when he was asked about the heart and soul of our Constitution, identified two clauses, two articles, 14 and 21. They are the first thing which anybody is taught about our Constitution. He says the heart and soul. Both 21 and 14 or 14 and 20 apply to non-citizens as much as citizens. One, that is 14, guarantees equality, non-arbitrariness and substantive due process. The other, right to life and liberty, which is now non-suspendable even in a declared national emergency. And friends, I don't want to digress, I don't have time, but the jurisprudential journey of Article 14 is fascinating. Originally, I don't have the time, I'm not going to take time, but just give me a minute. Originally, it was the equality doctrine. Don't treat equals unequally and unequals equally. From Royappa onwards in 1976, by court interpretation, 14 includes non-arbitrariness. What no reasonable person will do, apart from discrimination,
separate from discrimination. Non-arbitrary is second facet of 14. Third, from 1990s late or 1980s late, Maneka Gandhi's case added procedural due process. We must have due process of procedural kind in all laws, in all activities. And finally, for the last 5-7 years, we have substantive due process. Precisely what Benegal Rao Sahab, when he went and met Frankfurter in USA, had omitted from our constitution, has been brought in by judicial